Good afternoon, dear students. Today I will discuss about the internal energy, enthalpy, specific entropy, and entropy of gas mixture, and the numerical on it. This is the part of property of the gas mixture. The another properties was the discussed today. The internal energy, enthalpy, specific entropy, and the entropy. This is the part of unit 5, unit 4 subject, unit 4, and the subject name is the thermodynamics. This is the today outline. Dalton's law of the partial pressure, Avogadro's law of the additive volumes, relationship between the pressure volume and the mole fraction, relating PVT for the ideal gas mixture, properties of the gas mixture, extensive manner, and the property of gas mixture, intensity manner, numerical on the gas mixture. This is the Dalton's law of the partial pressure already discussed. The pressure of a gas, that is a mixture, is equal to the sum of the pressure each gas would exert if it exerted alone at the mixture temperature and the volume. Already explained, whenever the two gases are mixed with each other, the volume of the total mixture is the gas, is the individual volume of the gas. That is the gas A, which is the put up at the pressure P and the temperature T, but the volume is the VA, and the gas B another side. The pressure of the gas B is the pressure of gas B is the P, and the temperature at the T. The volume of the gas B is the VV, and the total volume of the gas mixture that would be of VA plus of the VB. Another side, the Avogadro law of the additive volumes, the volume of a gas mixture is equal to the sum of the volumes of the each gas would occupy if it is exerted alone at the mixture pressure and the temperature. This is also explained and followed the Dalton's law, which I already discussed. In this case also, the gas mixture volume, that is the VA plus of the VB, and the oxygen and nitrogen gas, two gases which are the considering in the gas A is the oxygen and the gas B is the nitrogen. 100 kilopascal, that is the pressure. 400 Kelvin, that is the temperature. 1 meter cube is the volume, and the individual volume, if they are taken, that is the 0.3 meter cube of the oxygen and the 0.7 meter cube of the nitrogen. That is summation of the 1 meter cube of the mixture volume. That is the mixture volume is representing here 100 kilopascal. That the mixture is the sustained at the pressure condition of 100 kilopascal, and the 400 Kelvin, that is the temperature condition, which is the sustained of the mixture. This is the relationship between the pressure volume and the mole fraction. ये आपका यहाँ पे प्रेशर रिलेशनशिप दिया हुआ है प्रेशर वॉल्यूम और मोल फ्रैक्शन के रूप में, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं. तो PI, that is the inert gas of the pressure, जिसको आपकी शुरुआत में जो भी गैसेस रहती हैं इनर्ट गैसेस के रूप में फॉर्म होती हैं, एंड द PM दैट इज द मिक्सचर ऑफ द gases pressure. Vi is the inert gas volume, and the Vm is the mixture gas volume. That is the mole fraction Ni upon the Nm. Because of the, we know that about the Pi is equal to, that is equal to Pv is equal to Nrt. If you put up that, तो यहाँ से आपको रिलेशनशिप मिलेगा Ni के फॉर्म में. That is the Ni of the number of mole fraction of the, that is the inert gas, and the number of mole fraction for the mixture, that is equal to the Yi, that is the mole fraction of the particular type of the gas. And similarly here it is represented. This is the relationship, that is the Pi by the Pm is equal to the Vi by the Vm is equal to the Ni by the Nm is equal to, called is the Yi. That is called the mole fraction. And the relating PVT for the ideal gas mixture, it is also represented in the mathematically form. P is equal to N, that is the number of mole, R bar, that is the universal gas constant, T upon V, and this is the pressure, volume, and the molar mass. If we choose the gas of mass, that is using the equation PV is equal to MRT, that is equal to here representing MRT, mass of the given in the grams, and the R is the characteristic gas constant, and the T is the temperature in the Kelvin. So capital M upon M, that is the number of moles, because of the molar mass is given 28, and the M of the gas that is given is the, suppose that it is a 5 kg, 2 kg, 3 kg of the particular gas, that is represented by the Pi is equal to Ni R bar T upon V. Pi by P, that is the ratio of the partial pressure of the inert gases to the mixture gases pressure, that is the representative of the mole fraction Yi, and the inert gas pressure, that is a P is equal to Pi is equal to Yi, that is a mole fraction,
into the P. So this is represented in the mathematically form. Properties of the gas mixture. It is the form of extensive internal energy represented UM. Mixture के लिए जो लिखा हुआ है यहाँ पे UM representing enthalpy HM, and the SM, that is the entropy representing here of the mixture. Internal energy in the kilojoule, enthalpy is in kilojoule, entropy is in kilojoule per degree Kelvin, and the change of internal energy of the mixture, it is represented by the mathematically form here. Similarly, enthalpy of the mixture, that change of the enthalpy of the mixture, it is represented by the mathematically form. Similarly, entropy, change of entropy of the mixture, it is represented in the form. It is already discussed in the upper side कि इंटरनल एनर्जी आपकी किलोजूल में है, एंथैल्पी आपकी किलोजूल में है और एंट्रोपी आपकी किलोजूल पर डिग्री केल्विन में. Property of the gas mixture, that is the intensity property. It is already discussed in the previous class, and it is represented is the internal energy of the mixture, that is represented by the mathematically formula HM, that is the enthalpy of the mixture represented in the mathematically formula, and the entropy represented also the mathematically formula. Similarly, specific heat at a constant pressure of the mixture is represented in the mathematically form. A specific heat at a constant pressure of the mixture represented in the mathematically form. Extensive and the intensity property represented here. If the internal energy of the A gas is the 1000 and the internal energy of the B gas is the 1800 kilojoule, that is the mixture of the internal energy, that is the 2800 kilojoule. Similarly, if the 2 kilomole of the A gas, 3 kilomole of the B gas, and the internal energy of the 500 kilojoule per mole and the 600 kilojoule per kilomole, that is the internal energy of the B, the mixture can be represented by the 560 kilojoule per kilomole. That is the representing intensity property of a mixture. But in case of A here, this is the represented the extensive property, because extensive property, it is the summation of the all the values. But in case of the taking of the average value of the intensity property by the weighted average value, here the adding the properties of the component, it is called the extensive property. But in case of the intensity property, calculating by the weighted averaging method. This is the numerical problem, expansion of an ideal gas mixture in a turbine. This is the problem, a gas mixture, oxygen, carbon dioxide, and the helium gases with the mass fraction of the 0.0625, 0.625, and 0.3125 respectively enter an adiabatic turbine. Is a 1000 kilopascal and 600 Kelvin steadily and expand to a 100 kilopascal pressure. The isentropic efficiency of the turbine is 90% for the gas component, assuming constant specific heat at a room temperature. Determine the work output per unit mass of the mixture and the exergy distortion and the second law efficiency of the turbine. Take the environmental temperature of the 25 degree centigrade. तो ये एक टरबाइन है जहां पे कि जो गैस एंटर कर रही है, एडियाबेटिक टरबाइन है जहां की हीट ट्रांसफर पूरी तरीके से जीरो होता है. तो व्हेन द gas is enter, mixture is enter, and the mixture in the form of the oxygen, carbon dioxide and the helium gases. मिक्सचर किसका है यहाँ पे? ऑक्सीजन गैस का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, हीलियम गैस का है, और सभी के लिए मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है. ऑक्सीजन के लिए 0.0625 है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 0.625 है, और हीलियम के लिए आपका 0.3125 है. और गैस जो एंटर कर रही है वो आपकी 1000 किलो पास्कल पे एंटर कर रही है और 600 केल्विन जो है यहाँ पे इसका टेम्परेचर है. तो वर्क आउटपुट यहाँ से कुछ मिलेगा, बिकॉज ऑफ व्हेन द gas is mixture is coming from this side, some work output is delivered to the turbine generating shaft, and after the expansion the pressure will release to the 100 kilopascal. यहाँ पे जो प्रेशर है वो 100 kilopascal का है, और जो आपका एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो T नॉट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड है. ओके, तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जो टरबाइन की वो 90% है, और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं जो गैस कंपोनेंट है उसके लिए कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट है रूम टेम्परेचर में. तो आपको वर्क आउटपुट निकालना है पर यूनिट मास ऑफ द मिक्सचर, एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन निकालना है, एंड द सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी निकालनी है टरबाइन के लिए. तो दिस इज द
solution analysis, when the going on for the mixture, the mass fraction of the mixture component are given. यहाँ पे दिया हुआ था जो वैल्यूज थी उसका हमने यहाँ पे वैल्यू दिखाई हुई है। ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, हीलियम के लिए, the specific heat of these gases at the room temperature are here given. तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है, सीबी की वैल्यू है, सीपी की वैल्यू है। यहाँ पे सीबी और सीपी की वैल्यू दी हुई है, ऑक्सीजन के लिए दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दी है, हीलियम के लिए दी है सीबी की वैल्यू, और सीपी की वैल्यू दी हुई है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और हीलियम के लिए। तो यहाँ पे अब आप सीपी की वैल्यू मिक्सचर के लिए निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑक्सीजन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द स्पेसिफिक हीट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ द हीलियम इनटू द स्पेसिफिक हीट ऑफ द हीलियम। जब आप यहाँ पे ऐसा करेंगे तो ये मिक्सचर के लिए निकल के आ जाएगी, सारी वैल्यू आपके पास दी हुई है। इसी तरीके से आपको जब सीवी का काम करना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन and CV of the oxygen is given, mole fraction of the carbon dioxide and the CV of the carbon dioxide is given, mole fraction of the helium and the CV of the helium is given। तो सारी वैल्यू जो दी हुई है इसको जब पुटअप करेंगे तो आपको मिक्सचर के लिए स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 1.425 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन, और ये स्पेसिफिक हीट निकल के आएगी मिक्सचर की कांस्टेंट प्रेशर के लिए 2.209 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। तो the apparent gas constant of the mixture and the specific heat ratio are capital R is equal to Cp minus of Cv 2.209 जो आपकी Cp आई थी minus of 1.425। ये जो आप वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 2.209 आई है Cp की वैल्यू और Cv की वैल्यू आई है 1.425। इसको जब पुट अप करेंगे तो कैपिटल R की वैल्यू निकलेगी 0.7836 किलो जूल पर डिग्री केजी पर डिग्री केल्विन, और आपकी जो गामा की वैल्यू है जिसको कि हम के से भी रिप्रेजेंट करते हैं सीपी बाई सीवी करेंगे तो 1.550 की वैल्यू आएगी। द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द एक्सपांशन फॉर द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जब निकालेंगे तो आपके पास P2 प्रेशर दिया हुआ है, P1 प्रेशर दिया है, T1 टेम्परेचर दिया हुआ है। तो आप T2 जो टेम्परेचर स्टेगनेंट टेम्परेचर वो आप निकाल सकते हैं। आपके पास K की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो ये दिस इज द आपका स्टेगनेशन फार्मूला जो आपका यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। इससे आप वैल्यू T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं जो दी हुई है, एंड द T2 माइनस ऑफ T1 ये जो लिखा हुआ फार्मूला, चूंकि आपकी वहां पे टरबाइन की एफिशिएंसी दी है तो जो T2 का टेम्परेचर है एग्जैक्ट टेम्परेचर वो आप निकाल सकते हैं। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द टरबाइन एफिशिएंसी एक्चुअल वर्क डन अपॉन द थ्योरेटिकल वर्क डन, एक्चुअल वर्क डन जब भी आपको टरबाइन से मिलता है वो बहुत कम रहता है कंपेयर्ड टू द एक्चुअल वर्क डन के। तो actual outlet temperature that is represented by the T2 temperature and it is represented by the 298.5 Kelvin। तो ये आपका एक्चुअल टेम्परेचर निकल के आ गया है। सिमिलरली वर्क आउटपुट की यदि बात करेंगे तो वर्क आउटपुट H1 माइनस ऑफ H2 इज इक्वल टू Cp T1 माइनस ऑफ T2 जब करेंगे तो ये आपका वर्क आउटपुट निकल के आएगा 666 किलो जूल पर केजी। ये आपका वर्क आउटपुट निकल के आया। The entropy change of the gas mixture and the exergy distortion in the turbine are, that is the H2 minus of S1 is equal to Cp natural log of T2 by T1 minus of R natural log of P2 by P1। ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है, क्योंकि आपके पास सभी वैल्यू पता है, Cp की वैल्यू पता है 2.209 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन, नेचुरल लॉग ऑफ T2 और T1 की वैल्यू आपको पता है, T2 इज द एक्चुअल टेम्परेचर माइनस ऑफ R की वैल्यू आपको पता है 0.7836 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन, नेचुरल लॉग ऑफ जो आपका एग्जिट प्रेशर है, टरबाइन के एग्जिट प्रेशर है 100 किलो पास्कल दिया हुआ है, और 1000 किलो पास्कल आपका इनलेट प्रेशर दिया हुआ है। तो इससे आप निकाल सकते हैं चेंज ऑफ एंट्रोपी की वैल्यू जो निकल के आ रही है 0.2658 किलो जूल पर डिग्री पर केजी पर डिग्री केल्विन। और सिमिलरली यहाँ से आप जो सेकेंड लॉ का जो थर्मल एफिशिएंसी वाला जो पार्ट बोला गया था वो आपका यहाँ पे 79.2 किलो जूल पर केजी के हिसाब से निकल के आ जाएगा। इट इज द फार्मूला ऑफ T नॉट इनटू द चेंज ऑफ एंट्रोपी। जब आप पुट अप करेंगे तो 79.2 किलो जूल पर केजी निकल के आ जाएगा। तो दिस इज द टुडे लेक्चर। नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द फ्यूल एंड द कंबशन। दिस इज द पार्ट ऑफ द यूनिट 5।